Hello children, today we are going to make elephant. Okay, elephant, big elephant we are going to make. Are you ready children for today's class? Yes. So take out your drawing copy and pencil eraser. Okay, I will show you step by step in my drawing copy. Okay, I have very beautiful drawing copy and color. Okay, so I will show you the drawing in my drawing copy step by step, slowly. Okay children, तुम लोगों को भी स्लोली करना होगा, एकदम स्लोली जाना होगा, स्टेप बाय स्टेप. ओके, एंड पेंसिल को जोर से प्रेस मत करना. डू नॉट होल्ड योर पेंसिल टाइटली, एकदम स्लोली. ठीक है, लाइटली पकड़ना. ठीक है चिल्ड्रन, रेडी, एक्साइटेड? ओके, सो लेट्स स्टार्ट द ड्राइंग. ओके चिल्ड्रन. Hello children, so we are going to make the elephant. Okay, first what we are going to do, first we will make a small circle here, then a big oval here. Okay children, see, first a small circle, then a big oval. So I will make the circle again here we will make the circle, see, lightly. Okay children, dark mat karna. So this is the oval. Done. So now what we will do, step by step we are going to make. Okay, so from here we are going to make the triangle. One curved line here, everyone see, like this. One curved line, then one more curved line here. So this is the trunk. There is the trunk. Okay, and now we will join these two circle and oval. We will join like this. Everyone see, we will join, and this one also we will join like this. Okay, and now what we will do, now we will erase this line. See, ये line erase करना होगा. See, मैंने erase कर दिया, ये line मैंने erase कर दिया. Now we will make the teeth. So here we will make the teeth like this. It's very easy. Okay, here we will make the teeth. Then we will draw here one line. So it's very easy children, see, like this we are going to make the elephant. Okay, now we will erase these lines here. Now we will make the legs. The front side leg we will make. So here we will start the leg from here like this. Okay, then one more leg here. Done. Okay, then one more leg here, the front side leg. Done. Then one more leg here. So this is the basic structure of the elephant. Okay children, say like this. Now we will erase this line. See, अभी हम लोग को ये लाइन इरेज करना होगा. ठीक है, now we will erase this line and this line. ठीक है, see, now we will erase this line. These two line I have erased. Now we will make the eyes. We will make a nice cute eyes. Okay, so here I have made this line for the eyes. See, and now we will make the ear. So this is the ear. Okay, and now here we will make the tail. See children, it's very easy. And then here now we will make the nail here. See, three curved lines. It's very easy. Three curved lines we have made. Okay, so our elephant is almost done. We will make grass here, grass. Okay, here we will make the background. Here we will make the background. Here we will make a stone. We will make two stone. We will make, and here we will make a tree. Okay, a tree we are going to make. It's very easy, like this. And here we will make some curved lines like this, and bushes.
So this is our elephant. Okay, ready children? So now we are going to color the elephant. Okay children, ready? So let's start the coloring children. Okay, for the elephant I am going to use the brown color. Okay, you can use any brown, light brown or dark brown, whatever you have you can use. Okay children, step by step, slowly we are going to do. Okay children, so now let's start. First what we are going to do, first we will make the outline here. Okay, outline we will do एकदम slowly step by step. लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए. We are not using black color direct. Okay children, black color is very dark color, that's why we are not using the black color. ठीक है children, black color use नहीं करना है. Black color is very dirty color, so do not use the black color. You can start with me. Okay children, मेरे साथ तुम लोग भी करते जाओ. ठीक है. See, brown color I have done. So now what we will do, I will use the brown color for the elephant. Okay, lightly. See children. ब्लैक कलर यूज नहीं करना है. इफ यू हैव डार्क ब्राउन, अगर तुम लोग के पास डार्क ब्राउन है तो डार्क ब्राउन यूज कर सकते हो. ठीक है, लेकिन ब्लैक कलर यूज मत करना. ब्लैक कलर इज वेरी डार्क कलर, सो वी आर नॉट गोइंग टू यूज द ब्लैक कलर. ओके चिल्ड्रन, सो यू नीड टू सिंग दिस सॉन्ग. ओके, ये गाना गाना होगा स्लोली स्टेप बाय स्टेप. ऐसे स्लोली स्टेप बाय स्टेप करना होगा. ठीक है, एकदम स्लोली स्टेप बाय स्टेप. लाइन से कलर बाहर नहीं जाना चाहिए और एक ही डायरेक्शन में, डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहिए. सी, एक ही डायरेक्शन में ऐसे. आई हैव नॉट चेंज द डायरेक्शन. एकदम स्लोली यू नीड टू गो. Here we will use pink color. Okay children, कान पे पिंक कलर होगा. We will use pink color. But the elephant we are using the light brown. If you have dark brown you can use. मेरे पास dark brown नहीं है, that's why I am using this light brown color. Okay, देखो ऐसे करना होगा. ठीक है चिल्ड्रन, एक ही साइड से लाइन से कलर बाहर नहीं जाना चाहिए. एकदम स्लोली. So brown color done. You have come with the brown color. Okay, see children. Now अभी क्या करना होगा, थोड़ा सा black color भी यूज करना होगा. ठीक है children. Now I will use the black color lightly. Okay, थोड़ा black color lightly. We will use the black color lightly. थोड़ा यहाँ पे. See how I am using the black color. एकदम जोर से मत करना. ठीक है, lightly करना. See children. If you are using dark brown के साथ भी तुम लोग ये ब्लैक कलर थोड़ा सा लाइटली यूज कर देना. जोर से मत करना क्योंकि ब्लैक कलर बहुत डार्क होता है, गंदा लगता है. इसलिए स्लोली करना. स्लोली एकदम जोर से मत करना. स्लोली. सी, मैं कहाँ से कर रहा हूँ देखो. फ्रॉम हियर अगेन आई हैव स्टार्टेड. थोड़ा सा यहाँ पे होगा ऐसे. ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे होगा ब्लैक कलर. तुम लोगों ने हाथी देखा है ना चिल्ड्रन, एलिफेंट देखा है. हमारे घर के पास ही एक है एलिफेंट, सो मैं उसको रोज चॉकलेट देता हूँ. ठीक है, ये लाइक चॉकलेट, किंडर जो चॉकलेट उसको पसंद है. सो उसका नाम है जग्गू. तो वो मेरे घर में आता है
and he play football with me always. So मैंने थोड़ा सा ब्लैक कलर कर दिया यहाँ पे, देखो मैंने थोड़ा सा ब्लैक कलर कहाँ कहाँ कर दिया, देखो ऐसे ब्लैक कलर। देखो ऐसे करना होगा, ठीक है। So brown color we have done, children, and I have used black color also. So now I will use the blue color for the eyes. Okay, here I will use the blue color for the eyes. Okay, black color we will try to avoid जितना हो सके, ठीक है। So done. Now we will make the tree. Step by step we are going, children. Okay, so first what we are doing, first outline we will do. First dark green we are going to do here. Okay, done. So first what we are going to do, now we will apply the green color one side. Okay, we will try to do shading. Okay, step by step, it's very easy. See, first dark green I am doing here. Now I will use the light green color. See, now I will use the light green color here. This is the second step. लाइट ग्रीन को और एक स्टेप हम लोग दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने और एक बार दे दिया लाइट ग्रीन को। Done. So now I will use little bit yellow color, and the top portion here we will use yellow color. So dark and light we are doing here. See, children, dark and light we have done here. So this is the tree. Okay, this is the tree we have done. Step by step we will do, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट दे रहा हूँ चिल्ड्रन, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा होगा, तुम लोग पॉज कर लेना, ठीक है। सो नाउ वी विल मेक द ब्राउन कलर हियर। सो इफ यू हैव डार्क ब्राउन यू कैन यूज द डार्क ब्राउन फॉर द outlines. So now we will start from this side. Okay, we will start from this side, slanting direction, step by step. See, slanting direction, step by step. First, this is the first step. See, this is the first step, then the second step, then the second step. See, like this you need to go, ekdam slowly slowly, step by step. Now the third number step, slowly slowly. Next, this portion we will make little bit dark. So this is the next step again. Now this is the last step, we will make light. Okay, we will make light here. If you have dark brown you can use dark brown for the dark area. Okay, for this area you can use the dark brown like a dark green, and here light brown grass. Okay, grass we will do here. So first we will use the dark green color here, and now we will use the dark green color here for the grass. Slowly slowly, step by step. See children, slowly slowly, step by step. White नहीं रहना चाहिए. Grass will be dark green color. Okay, green. Here also we will use dark green color. ठीक है children. Okay, so now we will make the stone. Okay, stone again we will use brown and black. Okay children, dark brown, if you have dark brown you can use dark brown. Okay children, so first I will use black color, but black color तुम लोग डायरेक्ट यूज मत करना, डार्क ब्राउन देना या लाइट ब्राउन देना, उसके बाद करना, ठीक है। मेरे पास डार्क ब्राउन नहीं है, so I am using this black color but lightly. Okay, but you all you try to use dark brown. Okay children. Now I will use brown color. See children, I have not used the black color direct. Okay,
ब्लैक कलर डायरेक्ट कभी भी यूज़ मत करना, ब्लैक कलर बहुत डार्क है ना, इसलिए ब्लैक कलर कभी भी यूज़ नहीं करना डायरेक्ट। यहाँ पे थोड़ा वाइट ही रख देना, ठीक है चिल्ड्रन। ही इज़ वेरी हंग्री, सो कुछ खाने के लिए दे देना, नहीं तो वो गुस्सा हो जाएगा, ठीक है चिल्ड्रन। कुछ खाने के लिए दे देना उसको। मैं तो देता हूँ, मेरे पास चॉकलेट ही नहीं रहता है, उसको ही मैं देता हूँ, मुझको जो भी चॉकलेट मिलता है मैं उसको ही देता हूँ, ठीक है चिल्ड्रन। ही लाइक्स चॉकलेट एंड ही लाइक्स मोमो ऑल्सो। ब्राउन वी विल डू स्लीपिंग डायरेक्शन। See children, sleeping direction we are doing here from one side slowly. See children, I have using only sleeping direction, only sleeping direction I am using। मैंने चेंज नहीं किया डायरेक्शन, देखो only sleeping direction। यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत स्मॉल एरिया है ना, तो तुम लोग भी ऐसे कर सकते हो, लेकिन बाकी सब एरिया तुम लोग को स्लीपिंग डायरेक्शन ही करना होगा। देखो हियर ऑल्सो स्लीपिंग डायरेक्शन। So children, I have completed the light green color. Okay, so now here we will use dark green color. So children, here I will use dark green color. Okay, like this we will do dark green color, standing direction. Okay, and sky color I will do light blue color. Okay, sky color I will do light blue color here, slanting direction step by step from one side. Okay children, let me complete this portion, then we will meet. Okay children, मुझको ये ख़त्म करने दो, उसके बाद मैं तुम लोग को मिलता हो, ठीक है चिल्ड्रन। ओके, सो चिल्ड्रन आई हैव completed the sky color and I have done the green color also. Okay, so here you need to do standing direction slowly step by step। See children, एकदम slowly step by step, remember these two sentence। Okay children, slowly step by step एंड वाइट नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा भी वाइट नहीं रहना चाहिए। सी चिल्ड्रन, ऐसे ही तुम लोगों को करना होगा, मैं जैसे कर रहा हूँ ऐसे ही करना होगा, ठीक है चिल्ड्रन। एकदम वाइट नहीं रहना चाहिए और डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन चिल्ड्रन, डू नॉट लीव वाइट स्पेस एंड डू नॉट चेंज द डायरेक्शन। So we have completed the drawing. Okay children, so like this always you need to do step by step, slowly। it may be coloring, it may be drawing। Okay children, और नेक्स्ट क्लास में क्या चाहिए तुम लोग कमेंट बॉक्स में दे देना चिल्ड्रन। प्रैक्टिसिंग एंड बाय बाय, बी हैप्पी।